Okay. So guys, if I need to share data, I have to share in the WhatsApp group. So everyone on the same. पहले जो सर्च शेयर करते थे वो फाइल कैसे शेयर करते थे? Ankita, just wait for a second. One student, Keshav will share the file with you. नहीं आपने ईमेल आईडी लिखा है ना मैंने उस पे ईमेल किया First stage है your HTML. Second stage है your Python. So first we'll do Python because you're okay with Python. So today if I start with HTML, you will get a headache for you. So what you can do, we'll start with your HTML, with your Python. Once you have confidence on Python, then we'll come to HTML next week. So HTML cloud will be on same week. So you will not have a headache for you. खाली एक वेब पेज बनाइए और वेब पेज के पीछे होगा पाइथन हाँ वो उतना बेसिक
I'll give you one, you can share. Guys, make cross check. You may have received the file. Done. Did you receive the code? Have you run the file?
Ankita, done for running the code. The file is shared on mail. Correct? Yes, sir. It's running one second. Okay. So guys, it will consume time. Just keep on running. It will take 5-10 minutes. It's okay. It is some output you may get for the sum rows. Guys, run the code. At least reached some codes are running. हाँ तब हो गया ट्री टाइम में चलेगा कोई बात नहीं आंसर्स नीचे रन हो रहा है ना ब्रिंग लैपटॉप
Shall I? On screen. So for the cloud, guys, as I mentioned prior, we require 3 different files. Okay. So the first journey of your file. Okay. So for cloud computing, we require 3 things. First thing, keep in your mind, we require Python. From Python, we only require model. That's the reason we are using Python for us. Once a Python is ready, then we require a second steps, which is nothing but for us is your HTML language, which help us to give us web page. After getting that, we just have to combine this using a package called as Flask. So this will be our journey. Really clear? So that's the reason, guys, today we're starting with Python. Once we are done with Python, next week we'll start with HTML and then deployment on cloud. So already yesterday we have done your WinZip account. We have done with your PuTTY. We have done with your AWS account. We have done with your VS Code. So in Python, guys, we have many models. We can use linear regression. We can use logistic regression. We can use decision tree and so on. I have taken the very easiest algorithm called as decision tree. Okay. Now in the tree, how many types of nodes we have? This one thing. Root node and Leaf node, root node, decision node. Okay. Simple way, either you call root node. After that, we can call parent node, or you can call decision node, meaning is same. Either you can call terminal nodes or leaf node, or we can call as child node. Easy to remember this one. Like we are a child for our parents. Our parents are child for their parents. So we have a journey from the root, we start, then we have a parent node, and then we have child nodes. Correct. We call decision node also sometime. Okay. And this is also called as terminal nodes. Already you have written the theory. Sometimes they also call as leaf node. The meaning is same. Now, what is the difference between root node and parent node? Root node is the main node. There can be separated. And the parent node is the information. Okay. What is the difference between root node and child nodes? Child node can be referred as a parent node. They can be taken information. My question is difference between root node and child node. नहीं, मैं आपको ना इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा हूँ. रूट नोड और चाइल्ड नोड का डिफरेंस पूछ रहा हूँ. So can I say from child node we stop and root node we Start. Another difference with now the difference between parent node and child nodes. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? Parent node, the information node, or where the decisions are made, that the layers. Oh. Okay, half correct. समझ नहीं ये है आपका रूट नोड. ये स्प्लिट हो गया.
तो ये हो गए आपके पैरेलल। फिर से स्प्लिट होगा तो ये क्या है, तो ये रूट नोड पर डिपेंड है। क्योंकि सारे मेरे लिए चाइल्ड नोड्स हैं। ये क्लियर हो गया। Now when you say guys parent node is a start and the child node is stop, when the कैसे मालूम हो गया, तो सॉफ्टवेयर को कैसे मालूम पड़ेगा कि अभी स्टॉप करना है? When you get answer as homogeneous, so whenever you reach to homogeneous, the process stops for you. So parent node, child node, and root node. So from the root node, we start the journey. From the parent node, we keep on splitting, and we have child nodes. Clear? There are three types of nodes. That is clear. Now, which method is used for splitting? This is called split, correct? Which method is used for splitting? Gaining, good one. Entropy. Anything else? We can use Gini, we can use entropy, we can use chi-square, and we can use information gain. So we have four methods in decision tree used for splitting. Now, if you are using a Gini in your example, what is the use of Gini? Only to split? Gini का क्या importance है, क्या use है? So there are four. Four में से आपने use किया Gini. So Gini क्या help करेगा हमारी? और कैसे help करेगा? So Gini help us to find the best variable, and this best variable is selected based on highest value. तो जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट वैल्यू होगा वो वेरिएबल क्या होगा हमारे लिए, बेस्ट वेरिएबल होगा, और वो ही वेरिएबल यूज होगा स्प्लिटिंग के लिए। और स्प्लिटिंग ऐसे होगी कि आंसर्स में क्या आ जाएंगे, होमोजेनियस। डू यू नो दिस, कैसे होता है? Okay, so we have root node, parent node, child node, then we have a Gini concept. Okay, now there is a concept called as pruning. Why we do pruning? हाँ, जो वेरिएबल फीचर्स पर रिक्वायर्ड है उसको हम कट करते हैं। तो कैसे मालूम पड़ेगा कहाँ से कट करना है? ये स्टेप नंबर 1 होता है, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 2, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 3. So why we do pruning, that is my question. You say the correct point कि हम यहाँ पे कट करते ट्री को. I agree with that. कट क्यों करना है? तो अनवांटेड क्यों है वो? कैसे मालूम पड़ा कि वो अनवांटेड है? तो रिमूविंग अननेसेसरी लीव, ठीक है, चलो ये पॉइंट क्लियर है. रिमूविंग एक्स्ट्रा लीव. कैसे मालूम पड़ेगा कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है रिमूव करने से?
कटिंग इज करेक्ट, रिमूविंग एक्स्ट्रा लीफ जो जिसकी नीड नहीं है, मतलब रिमूव करने से आंसर में चेंजेस नहीं आएंगे। तो वो कैसे पता लग गया कि चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए? कैसे लोगे फाइनल डिसीजन? बेस्ड ऑन ये आंसर है। अगर हमने फुल ट्री बनाई, एक्यूरेसी ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, हमने कट किया और एक्यूरेसी में कोई चेंज नहीं आता, दिस इंडिकेट देयर इज नो, वी हैव रिमूव्ड एक्स्ट्रा लीव्स। But the main purpose of invention of pruning is to control overfitting. इसका एक्चुअल इन्वेंशन हुआ था कंट्रोल करने के लिए ओवरफिटिंग। ये क्लियर हो गया? तो व्हाट इज ओवरफिटिंग? एक पॉइंट वैलिड है। व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्यूरेसी? Any value was crosses more than 90, okay, universal law, okay, more than 90 is called as overfitting, less than 70 is called as underfit, between this range is called as good fit. That's the reason always we required accuracy between 70 to 90. Point number one. Second point, train and test difference has to be less. जब ट्रेन की एक्यूरेसी अगर 80 आती है, जब टेस्ट की 80 to 85 चलेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये रूल है। Means the difference between train and test has to be less always. Example है, as such कोई rule define नहीं है, they just have written the difference between train and test should not be very high. The statement given, the rule and condition is not given by none of the scientists in the world till now. Okay. Shall I? That's okay. तो आप देंगे लैपटॉप, I'll check the error. आपका हो गया रन? सारे रन हो गए? You reached till the last one, till here. Ankita, done for you till from the start? Yes, sir. Error तो अब बीच में से रन कर रहे हो सर, उसको रन करना है आपको। You can check right there. Guys, मैंने 4 फाइल लिया है ना?
आपने सुपर स्टोर टैबलो की फाइल नहीं की? ठीक है. Now, yes, the objective is also written on the file. So, objective is to predict the behavior to retain customer. What is the meaning of retain? कस्टमर को वापस बुलाना है, मतलब ये जा रहे हैं, ये क्लियर हो गया. और कस्टमर्स को वापस बुलाने के लिए बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना है बेस्ड ऑन बिहेवियर. सेकंड, यू कैन एनालाइज ऑल द रिलेवेंट कस्टमर्स डेटा, मतलब जितना भी कस्टमर्स का डेटा है आप उसको यूज कर सकते हो. एंड डेवलप द फोकस कस्टमर रिटेंशन प्रोग्राम, मतलब आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन पैटर्न बनाना है, पता लगे कि ये कस्टमर्स जा रहे हैं तो हम उस पर फोकस करेंगे. सारे कस्टमर को फोकस करने का कोई नीड नहीं है. जो कस्टमर्स जा रहे हैं उनमें से मैक्सिमम कौन लोग हैं और जाने की रीजन क्या है, ये क्लियर हो गया. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग? एग्जांपल, लेट्स से वी हैव Keshav book a product from Zomato, and Zomato people say we'll deliver your food in 30 minutes, and they deliver in 1 hour 30 minutes. You will be happy. Next time we'll come to Zomato. Where he will go? Swiggy. Can I say customer change the mindset? That is called churn. Same way, you're using a SIM card of Vodafone. This is a scenario. You're using a SIM card of Vodafone from last many months and years. Jio came free internet. What you will do? We'll change our network. Number will remain same. Only network will get changed. That changing of network concept is called as the churn concept. Was it clear? So people who change the network we call as churn. Yes. People who don't change we call as no. Scenario clear, guys? So people who change, मतलब वो MNP के लिए पहले अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स 48 आवर्स के बाद ये नेटवर्क गेट चेंज. So 24 to 48 hours company have to retain you back. तो क्या करेंगे, आपको कॉल करके बोलेंगे what are you getting in Jio will also give you. वो ट्राई करेंगे कि आपको रिटेन करें वापस ले. So we using the model we need to predict what is the chance you will change your network. Today you're using Jio, tomorrow can you change to Vodafone? We have a right to change. So when a customer changes the network, loss to the company, loss of customer and loss of revenue, two things. कस्टमर लॉस नहीं होना चाहिए. कस्टमर रिचार्ज नहीं कर रहा है, ठीक है, आज नहीं करेगा तो कल करेगा, कल नहीं करेगा तो नेक्स्ट मंथ इज आफ्टर 6 months. We will get revenue. If customer keep on leaving, can I say company will by default face a huge loss? Got the point? Scenario clear, guys? Now same way we have a customer ID. Means every person will get some unique ID. We have their gender, whether you are a senior citizen or not, whether you are a partner of like a prime customer or not, whether you do your own recharge or your mom dad do. From last how many months you are using a SIM card, whether you have phone service, landline service or not. If you have multiple phone service with landline, mobile phone, SIM network or not, which type of internet we use, fiber optics or DSL. Whether you have taken online securities. Online security means like antivirus and so on. Device protection means insurance policy. Who take insurance policy, guys? If you're using Realme phone and one person using iPhone, who will take insurance policy? क्यों? महंगा है इसलिए. ठीक है. Tech support means how many times you call to the customer care. Streaming TVs and mobile means how many you have taken any OTT recharge or not. How you do a monthly recharge. Paperless bills. This is a prepaid customer and postpaid customer. We are working on postpaid customer. Postpaid means first you use the network, you get a bill, and then you pay the money. Correct? So paperless bill. Then we have payment method. How you make the payment. How much recharge you do. These are in dollars, guys. Okay.
and total recharge. What is the difference on monthly and total? Total is on the For example, I am using from the last how many months? 34 months. So 34 months तक मैंने कितना रिचार्ज किया है? And every month 56. Difference clear? This answer till 38 months. This is for every month. Churn no means he will not change the network. Logic clear? Can we call this as historical data, guys? Okay. First we do pre-processing. So I just remove the column which is called as customer ID. Because customer ID is only used to find the customer, not find analysis. Agree? आप क्या क्लिक कर रहे हो सर? कुछ हेल्प चाहिए? Then we check info. How many rows we have? Number of columns. ये clear हो गया. Then how many are numbers according to you? This is number. This two has to be numbers. Correct? But when I check the info of data, see what is the data type for 10 years? What is the data type for monthly charges? Total bill. Object means this is a number data, but software rating as category. There can be some issue in my data. Okay. So let's try for describe. It is not reading also. That is clear because for category we cannot compute mean. So what I've done in employee column name total charges, I say replace. कहीं पे भी space होगा. Replace करना है NAND से. Convert data type to float. Assigning in same data, same column. Now if you see type change. Again, next we check missing values, present or not. Data set name employee is any. Checks for missing. Do sum. Do we have missing present? In gender, how many rows? 0. In partners, text about total charges. So how many rows missing we have? 11 rows. Logic clear over here. Now this data, which is nothing but number in nature, can I say now? So now if this is a number, so what I do in employee column name total charges, I say fill. नहीं मतलब fill करना है. What I'm filling with? Mean of same column. In place through means do the replacement and change. Now if you check, do we have missing present? ये clear हो गया. Then again we should describe. See, I'm getting now mean median mode because it become number in nature. For numbers, we can compute mean median mode. So this is the head of the data, guys, which we have. If I ask you, do you have multiple phones? What do you say? No, I don't have. Or yes, I have. Correct? You will say, I no service, no internet service. I don't have any service. So when people say no internet or no service, that indicate no only, guys. So for employee, column name, online security means whether you have taken any online security platforms, value counts. How many no we have? Some people say I don't want the service. Someone said no, I don't have internet only. Why to take your service? How many we have? 1526. No internet service also indicate no only, guys. So can I do sum of this two? Is how much? So what I'm trying to do, whenever we have written no internet service, I'm replacing with no. You can see. In employee, column name, online security,
replace. इसे replace करना है. No date service को replace with. If you see now, they are replaced. So 3498 plus 1526. इसको replace किया है 9 से. तो total 9 कितने हो गए? Any changes happen in the yes? No. Logic clear? The way I change for one column, can I change for next column? I've changed for all the remaining columns. Next case, we're done with missing values, we're done with data manipulation. Clear? Next, we will check for outliers. So in one case study, I'm taking all the point values. Okay. So we're done with deletion of column, which is not required. We're done with missing values. We're done with data manipulation. Now we're going for outlier. Outlier we check with the help of box plot. So data set name, employee, column name, monthly charge. Do we have outlier present? Same way if I check for any other column. Do we have outlier present? Present? No. So can I say there is no outlier? Okay. All these steps come under delivery. So after data import, we have done data pre-processing. Next one. Now we have churn. Churn means people apply for changing network. So in employee, column name, churn, give me value counts. How many are no? How many are yes? So people who have changed the network, they are yes. Can we call they are bad people? If you're changing the network for company, you're bad now. So yes means bad customer, no means good customer for understanding. So how many yes we have? Divided by total number of count. How much percent? So 26.5% is a churn rate in my data. Means out of 7,000 customers, 26% people have applied for changing network. Clear? Can we call this is manual calculation? Converting same thing in terms of diagram. See, output remains same. ये पैकेज इंस्टॉल करना ये लॉजिक क्लियर हो गया गाइस सो 26.5% इज अ चर्न रेट ऑफ अ माय डेटा अभी 26% लोग नेटवर्क छोड़ रहे हैं कौन सबसे ज्यादा लोग छोड़ रहे हैं सो बिकॉज वी नीड टू बिहेव मेक अ डेवलप फोकस रिटेंशन प्रोग्राम मतलब देयर आर पीपल लीविंग दिस इज 26% 26% means how many people? So what I'll do, I'll take this 1869 separately over here. So I just say employee say churn mein wherever there is yes. Limit it as employee churn. So now we have churn rate. How much is churn rate in our data? 26 point. ये clear हो गया guys? इतना churning rate है present. Now only this data we have taken for doing कि लोग छोड़ के तो जा रहे हैं हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं क्या रीजन है और ये कस्टमर में से सबसे ज्यादा कौन से कस्टमर्स है जो हमें छोड़ के जा रहे हैं तो we need to find a specific reason so that reason analysis called as can you see guys everywhere I have taken how many number of rows now
1 and 6 times are what? Sir, it's on yes है ना? मैंने इनको लिया and taken only all the category variable and I have made a sunburst chart. Maximum people are living from where? No means youth people. Yes means senior citizen. Who are living? ये सर्कल में सबसे ज्यादा एरिया किसने कवर किया है? Do they know who are mostly living because of which internet? Fiber optics. Because of which recharge systems? One, two. Which payment? Electronics. So people like customer who are facing difficulties. So before COVID, guys, we do monthly recharge. So monthly recharge एक pain है. Fiber opticals एक बहुत बड़ा pain था Vodafone के लिए. That's the reason Jio is boosted. Correct? And this difficulty is faced by youth people, which is no. तो youth जब payment करते हैं ना तो उनको क्या चाहिए? Fiber opticals better चाहिए, speed. And they don't like electronics payment. Is it clear, guys? इसी एरिया के सबसे ज्यादा कस्टमर्स जा रहे हैं. क्वेश्चन थे ना कि ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तो रीजन क्या है कि वो यूथ है और यूथ को स्पीड चाहिए. स्पीड में मंथली रिचार्ज उनके लिए पेनफुल एरिया है. That's the reason we can say that the customer who are leaving the service are youth people using fiber opticals, do recharge monthly and make payment electronic. So this is a painful area for us. Electronics payment मतलब आपको स्टोर पे आके करना पड़ेगा. So everybody cannot go to the store. That's the reason nowadays we have Google recharge. GP से आप recharge कर सकते हो. They have come with the different payment methods. ये clear हो गया? This is just to study. So till here is a part of data analysis. Just to understand what is happening in the data. So can I say trend analysis will guide to the company? कहाँ पे मेहनत करनी है कि फाइबर ऑप्टिकल्स अच्छा करो, मंथली रिचार्ज का कॉन्सेप्ट बंद करो, क्वार्टरली स्टार्ट करो और यूथ कस्टमर को ज्यादा टारगेट करो. प्रूव हो गया. Now churn customers. Now what do you do? Employee is the main file. I selected only those columns which are numbers. ये क्लियर हो गया. मैंने डेटा में से नंबर्स कॉलम को अलग किए और वैसे ही मैंने क्या अलग किए? कैटेगरी. सी द कोड आर सेम, नो चेंज इन कोड. सिर्फ यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट. एंड आई हैव टेकन ऑल द कैटेगरी डेटा सेपरेट. So I break into number separate and category separate. Why we do this step, guys? ऐसे हम क्यों कर रहे separate? आप लोगों ने कभी किया है? Why? The drawback is Python do not read category data for machine learning. तो हमें इस कैटेगरी को नंबर्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग लेबल एनकोडर व्हिच वर्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मींस फीमेल और मेल है. अल्फाबेटिकल वाइज व्हिच कम फर्स्ट? फीमेल. तो फीमेल की कोडिंग क्या हो जाएगी? 0 और मेल की कोडिंग हो जाएगी 1. ये क्लियर हो गया. So this way we converted into employee dummies. So एक फाइल का नाम क्या है? Employee dummies और एक फाइल का नाम क्या है? Employee. When I combine these two files, employee name and employee dummies, we will get a new file called employee combine. ये clear हो गया? So now my data is ready for modeling. मतलब outlier remove हो गया, missing remove हो गया, मेरे data manipulations हो गया, churn rate हो गया, कि कौन से टाइप के कस्टमर मूव हो रहे हैं वो क्लियर हो गया. Okay, now my data is ready for modeling. So once your data is ready, we go for need to explain this code data partition. So we split the ratio of 70 and 30 ratio. From scale on, I want to do tree. Which tree? Recent tree class. Assigning in dt. dt dot fit.
Unextended and whited. Fit मतलब apply करना. Okay. Then what I've done, PD, pandas, combining white train and exchange to have a data called as train. ये clear हो गया? Now once you have a train, do we have anywhere prediction happens? Last column name? Maybe. Then I say okay, from the train, select column. We'll give you column name starting from 1. Index number start from 0. So churn क्या है? 0 है. Train क्या है? Tenure 1. So 1 से start करो और सारे column name को select करना है. Converting to list. Can you see all the column names? So independent variable में क्या है? सारे column के नाम है. And I make this tree. Now this tree is easy to read. Easy है readable है. So this is very difficult to read it. So what we can do, if it's difficult, it's okay. It's a tree, we can't do anything. Then this is your train data. See what is the last column name? I say model name. DT. I say predict. करना उसके लिए predict करना है किसके लिए? Explain. और train data पे क्या create करना है? न्यू कॉलम का नाम predicted. ये clear हो गया? This is the same process guys you may have done prior. Can you see we have? So we have actuals also and we have predicted also. Now what I'll do, I'll check the my performance how I predicted. कि मैंने कैसे predict किया? My algorithm is able to predict properly or not. So that we check with the help of confusion matrix. पहले create किया है confusion matrix और you have done with classification report. क्या use किया? दोनों? हाँ. So 3616 plus 130 divided by total number of rows. How much? तो ये good fit है, bad fit है, क्या under fit है, क्या over fit है? So whenever tree overfit indicates answers is wrong because you cannot predict accurately for everyone. Let's say what is the meaning of accurate? Let's say Virat Kohli is playing a match. He's batting. Can you predict for how many runs he will score after every ball? क्यों नहीं? कर ही नहीं सकते. Possible ही नहीं है. For every row we cannot predict accurately. So if tree is giving accurately, that means something is wrong with this. Because the creator of algorithm say, my decision tree will always give you 100% accuracy. Will always give you overfitting. ये creator ने बोला जिसने algorithms को बनाया है. ये clear हो गया? Because of this scenario, we do pruning. अब clear हो गया कि pruning क्यों करते हैं? Pruning करने के दो reason है. सबसे बड़ा main reason क्या है? Overfitting. सेकेंड रीजन अगर ओवरफिटिंग नहीं हो रहा है लेकिन ट्री बहुत लेंथी है तो कट करने के लिए भी. प्रूनिंग इज अ टेक्निकल वर्ड. लेमन लैंग्वेज वी कॉल एज कट. नाउ फॉर कटिंग वी हैव थ्री मेथड्स. नंबर ऑफ सैंपल इन चाइल्ड नोट्स, नंबर ऑफ सैंपल इन पैरेंट नोट्स, देन हाउ मेनी ब्रांचेस यू वांट. दिस कॉन्सेप्ट क्लियर फॉर यू? Let's say I'm just giving, I want to make how many branch? 3 branch. Who decided this guys? We decided. Software has not done. Okay. Understand the process flow. This tree is giving how much percent accuracy? To control overfitting, what we are doing? ये clear हो गया? अभी pruning क्या हमने branches कितने रखे? 3. Okay, branches 3. Parent node how much I have taken?
150. Child, how much I have taken? ये clear हो गया? Assigning in dt. dt is applied on x train and y train. Are you clear? Then I make my tree. First branch, second branch, and third branch. See, can I say this tree is smaller as compared to any other tree? Logic clear हो गया? Tree small हो गया ना, तीन ही branch है. Okay. Now let's check the accuracy. So dt is the model name. I say predict. Predict for x train. In the train mechanical column called predicted. Now again I'll make confusion matrix. 3373 plus 509 divided by total number of rows. How much percent? If we round off, how much percent? 39, no? So can I say we control overfitting? Accuracy coming in good range. So this is called as overfit, and this is called as good fit. Logic clear, guys? ये समझ आ गया? Okay. Now my training is clear. My model is ready. Now what I'll go for? Test data. PD dot X test and Y test we combine. See, I have not done any prediction for test data. We have churn ready. Now what I've done, I said dt predict for X test. In the test, make a new column called predicted. Logic clear over here. Then I make a confusion matrix for test data. 114 plus 214. How much is accuracy? Round off. How much we are getting for train, guys? 29. How much we are getting for test? Close to match, guys. This is your training. And this is your testing. Is a concept clear over here? Any question, please ask. Have you done concept called grid search? ठीक है, अब इसको समझते हैं. अभी हमने कॉम्बिनेशन क्या लिए थे? 3, 150 and 50. Now guys, use say any combination which you want to draw. ये क्लियर हो गया ना? ओवरफिटिंग, गुड फिट कैसे करते हैं और करने के लिए क्या यूज करेंगे? प्रूनिंग. अभी ये जो हम यूज करें ना कॉम्बिनेशंस, ये हमने कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड किया? Random. We decided now. It's a randomly decided by us. Question. ये point clear था guys. Now guys, this decide us by randomly. Now you tell which combination should I take. I'll take that one. आप लोग कोई combinations बोलो. 25, okay. 100, okay. 7. What extra मिलेगा? ठीक है. 7. Again, I have done randomly. Okay, this is sent. Numbers given by this guy. I should have given the numbers. I'll move the branches for you because this tree will take time. हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप डिसाइड करोगे. And what is called grid search. Just wait for a second. First branch, second branch, third branch, fourth branch, fifth branch, sixth branch, and 7. ये clear हो गया? I again make my train data prediction using because the model is new. Okay.
how much is accuracy now? So change in combination have changed my accuracy. You can see. I'll copy this. I'll paste it. What is the combination you have said? Branches 7, parent node 100, child nodes 25. Correct? And we go for, I'll write down over here, ये good fit था. Correct? अभी यहाँ पे वो how much is the accuracy for train? 81% ना buddy. Training is how much? 81. I make again test data, predict for X test data using new model. This is for training 81 after changes, and how much for test? 29. Good fit or bad fit? ये भी good fit है. ये clear okay? अब ये हमने कैसे डिसाइड किया था? पहला वाला कॉम्बिनेशन रैंडम था. सेकंड कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड किया? ये भी ऑल्सो रैंडम है. लेट्स ट्राई वन मोर. ओके, से एनी कॉम्बिनेशन 4 ब्रांचेस. पैरेंट नोड बोलिए. ये 30. ओके, 125. ये क्लियर हो गया. Now this number also guys you have given. This is not my number. Okay. I make the tree. How many branches I make? 4. So I should have 4 branches. First branch, second branch, third branch, and fourth branch. You can see. One, two, three, four. 4 branch, correct? How much parent? 125. And child? 30. How we decided? Random. Be clear of you? Now, again, we do prediction using new model, okay, which have only 4 branches. Okay. Then we make confusion matrix. How much accuracy? 80%. So यहाँ पे 80 है. Then I go for test data. I predict for test data. Same code I'm running, guys. Okay. Training was 80. How much is the test we have now? अभी ये तीनों हमने randomly किया. Can I say all 3 we have done manually? अब ये तीनों combinations में सबसे best कौन सा है आप बताओ. Which one? Everyone is good fit, na? You tell me which is the best. ये क्यों best है? हाँ तो ये कौन सा ज़्यादा difference है? -1 to the difference है ना. So always accuracy and the difference between trainer test has to be low. Exact same होना ऐसे कोई rule नहीं है. Difference low है, fine. तो लिख लें ये manual किया. जब manual combination try करते हो उसको बोलते हैं greed search. उसमें से जो best select करते हो. Greedy means जितने भी दोगे उतने वो चाहिए. तो जितने भी आप combination दोगे वो उतने combination pick करेगा और search करेगा जो best है. And जो best find होगा उसको हम बोलेंगे greed search.
ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ग्रिड सर्च का? Want me to repeat? Okay, applying multiple combinations, okay, and selecting the best one, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रिड सर्च। कॉम्बिनेशन भी मैनुअली है ना, मतलब रैंडम ही है, तो रैंडम में से बेस्ट फाइंड करने को हम बोलते हैं ग्रिड सर्च। लॉजिक क्लियर हो गया? अभी हमने ये सब कुछ मैनुअली एंट्री की थी। अगर आप एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका कोड का नाम है ग्रिड सर्च। नाउ आई हैव मेड कॉम्बिनेशंस। 3 is how much? 9 3 टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? अभी कॉम्बिनेशंस कैसे समझोगे आप, ये देखिए। मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ पहले, ठीक है? ये समझ में आ जाएगा तो इजी हो जाएगा। 300 फर्स्ट, 300 कॉमा 50 कॉमा 3 में से फर्स्ट कॉम्बिनेशन 300 कॉमा 50 कॉमा 4 सेकेंड कॉम्बिनेशंस। ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे ना। देन अगेन विल डू फॉर 300 कॉमा 60 कॉमा 3 300 कॉमा 60 कॉमा 4। ये समझ आया? तो हर 300 के कितने कॉम्बिनेशन है? 4। 150 के कितने होंगे? 4 4 प्लस 4 8 2 2 जा 4 2 जा सेम हो गया। ये क्लियर हो गया? So if I do same combination by 3 3, can we get 27? कॉम्बिनेशन समझ आया गाइस? हमने असाइन किया parameters. I want to do grid search using decision tree, using all parameter combinations. तो यहाँ पे आप देखो, ये लाइन दिख रही है, मैं ये रिमूव कर देता हूँ। See, are you getting that line? अब वो रन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। Are you getting that line? Fitted line? तो वॉबस का क्या यूज है? वो लाइन को प्रिंट करना, ये लाइन को प्रिंट करेगा, इसका ये यूज है। कितने कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं? Repeating how many number of times? 10 27 सा। यूनिक कितने हैं? ये क्लियर हो गया? उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा हमने फाइंड किया? 6 50 150 and this combination is best for me. That's it. This will save time as compared to this manual. फंक्शन का नाम क्या है? Okay. वो हम डिसाइड करेंगे। हाँ। वो आपके ऊपर है, आप रैंडमली कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते। इसलिए पहले मैंने आपको मैनुअल बताया कि कैसे एंटर होता है। मैनुअल में से मैनुअल रैंडम है, रैंडम मैनुअल में से बेस्ट सिलेक्ट करने को ग्रिड सर्च में। आप इंडस्ट्री में रहो, क्लासरूम में रहो, आपको मैनुअली करना होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। आप कुछ करेक्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आप ये ले लो, आपके ऊपर 4 3 जा 12 3 जा, कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? आगे 36। सो आपके ऊपर ऐसा कोई रोल नहीं है। ये क्लियर हो गया गाइस? समझ आया? अभी क्वेश्चन है कि हमने प्रेडिक्ट किया ये सिनेरियो के लिए, what is going to be happen? Okay, let me take one more.
मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, एक सेकंड। हमने जब इतनी प्रोसेस, इस प्रोसेस क्लियर हो गया। प्रूनिंग क्यों करते हैं, प्रूनिंग करने से क्या होगा, ग्रीड सर्च किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ट्राई कैसे होते हैं, उसमें से बेस्ट कैसे सेलेक्ट होता है, ये क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें बिजनेस को सबमिट करना है, अभी आप इनमें से कौन सा आउटपुट सेलेक्ट कर रहे हैं, 7 वाला, 725, तो मैं ऊपर वही रन कर देता हूँ, ठीक है। हमारा मॉडल का नाम क्या रहेगा, 700 और 25, ये क्लियर हो गया। अब ये मॉडल का नाम क्या है, DT। we sharing this updated file, okay? So what I say that when I submit to business, तब business को क्या submit करोगे, business submission। अब business को पूरी फाइल सबमिट नहीं करोगे, you will submit business कि हमारे जब हमने मॉडल बनाया था तो इसकी ट्रेन की एक्यूरेसी कितनी थी, 81% आनी चाहिए ना। हाँ, एक सेकेंड, ये हमने मॉडल रन किया, बाकी कोड रन नहीं किया ना। So we will submit only accuracy, ये accuracy आनी चाहिए। मतलब आप जब भी मेरे मॉडल को यूज करोगे कोई भी डेटा पे, तो परफॉर्मेंस कितना होगा, 81%। नाउ अभी ट्री है, हम फोटो तो नहीं भेज सकते मॉडल बिजनेस को, तो मॉडल की विल गिव आवर मॉडल, मॉडल का नेम क्या है, हमने रखा है DT, है ना। सो पिकल, मॉडल डॉट पिकल, पिकल मतलब एक फाइल है जो मॉडल को एक्सपोर्ट करेगा आपके लिए, मॉडल नेम DT। DT को एक्सपोर्ट करना है क्या नाम से, हाँ, DT मॉडल। फॉर्मेट ऑफ द फाइल पिकल। अब ये फाइल कहाँ पे जाके एक्सपोर्ट होगी, मेरे यहाँ पे। अभी यहाँ पे कहीं दिख रही है आपको DT मॉडल, कहीं लिखा हुआ नहीं ना। okay. So this is my location, on this location I'm exporting, आपको देखिए DT। तो ये मॉडल है, मॉडल मतलब इसके अंदर इमेज है, ट्री है, ये क्लियर हो गया। this file we are expecting for deployment in cloud। तो बिजनेस पे ये चीज सबमिट करोगे जिसपे वो क्लाउड पे अप्लाई करेगा, समझ आ गया। ये फाइल हमें चाहिए। क्वेश्चन, अभी लाइव कस्टमर के लिए कैसे प्रेडिक्ट होगा, अभी हमने क्या कर दिया, मॉडल को तो एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अज्यूमिंग यू ऑल आर यूजिंग अ नेटवर्क, अभी ही यूजिंग अ वोडाफोन सिम कार्ड, मैं आस्क हिम कि कितने महीने से यूज कर रहे हो, कैन ही गिव द आंसर लॉजिकली, इफ आई आस्क हिम, दे सकते हो। अब ये यूज कर रहे, मुझे ये नहीं पता है कि वो नेक्स्ट मंथ नेटवर्क छोड़ेंगे कि नहीं, नेक्स्ट मंथ, हाँ, नेक्स्ट मंथ वो क्या करने वाले हैं मुझे आज पता लगा, दैट इज अ जॉब ऑफ एनालिस्ट। तो मैंने इनको पूछा कि आप कितने महीने से यूज कर रहे हो, तो आई हैव दैट डेटा, आई नो हाउ मेनी रिचार्ज यू डू, आई नो अभी तक का कितना रिचार्ज किया है, जेंडर 1 है, ओके, सीनियर सिटीजन नहीं है, कैन आई से दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर ओनली। अभी यूज कर रहे हैं ना, इन्होंने अप्लाई तो नहीं किया MNP के लिए, तो कैन आई से ही इज लिविंग, आई डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन, अग्री। तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन क्या है, X, Y अवेलेबल होगा क्या, बिकॉज ऑलरेडी आप सिम कार्ड यूज कर रहे हो ना, तो आप तो लाइव कस्टमर ही हो। सो हाउ मेनी लाइव कस्टमर डेटा हैव टेकन, 4।
ये क्लियर हो गया। मॉडल का नाम क्या रखा है हमने, डीटी मॉडल। अब इस मॉडल को हमने एक्सपोर्ट किया था ना, तो आपको इस मॉडल को क्या करना पड़ेगा, फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये समझ आ रहा है। मॉडल का नाम क्या रखा हमने, डीटी मॉडल। फाइल का फॉर्मेट पीएलके। ओपन कर रहे हैं, लोड किस में कर रहे हैं, मॉडल का नाम क्या है, तो इस डेटा के लिए हम क्या करेंगे, अभी प्रेडिक्ट कर देंगे, हो गया। नन ऑफ द कस्टमर इज गोइंग टू लीव अस। ये छोड़ने वाले नहीं है, तो इनको कोई ऑफर देना नहीं है, जैसे गाड़ी चल रही है चलने दो। दैट्स द रीजन वी मेक मॉडल गाइस, ताकि फ्यूचर कस्टमर क्या बिहेव करेगा फ्यूचर में, उसको हम अभी से प्रिडिक्ट करो। बिजनेस सेंस क्लियर हो गया, हम मॉडल क्यों बनाते हैं, अप्रोच क्लियर हो गया। आपका यही क्वेश्चन था ना कि हम मॉडल क्यों बना रहे हैं। एनी क्वेश्चन इन योर माइंड कैन से, माइंड में भी क्वेश्चन है तो बोल सकते हो। हाँ पूछे, ये स्टेप्स आप, ये आप मैंडेटरी, हाँ ये मैंडेटरी स्टेप्स है। मॉडलिंग के बाद के स्टेप्स हर मॉडल के लिए चेंज होंगे। जैसे कि प्रूनिंग सिर्फ रैंडम फॉरेस्ट में ही है, लॉजिस्टिक में नहीं है, तो वहां पे प्रूनिंग कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो बिफोर टिल डेटा पार्टीशन वॉट एवर वी हैव डन यू हैव टू डू फॉर ऑल द डेटा। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। From my side, I have teach you the concept of machine learning plus how we use in business and why we make model. वो पैकेज इंस्टॉल करना है, फिर इंस्टॉल मॉडल है। होने के बाद उसको रिमूव करेगा। आपको guys, the moral of the story is you should be know कि हमने मॉडल क्यों बनाया, ताकि नेक्स्ट मंथ कितने कस्टमर छोड़ के जाएंगे वो अभी पता लगे, ताकि वो अप्लाई करने से पहले हम उनको कॉल करके ऑफर दें। Got the point? The same way can we do in a bank? Next month who will going to miss the EMI? नेक्स्ट मंथ पे करना है, हम अभी प्रेडिक्ट करें कि ये ईएमआई नहीं भरेगा, हम उसको अभी कॉल कर देंगे। तो कैन आई से दिस विल हेल्प अस टू रिड्यूस द लॉस इन अ कंपनी। लॉस रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो जाएगा। Yeah.
पर्सन से कि व्हाट इज द बिजनेस इनसाइट। यहाँ पे बिजनेस इनसाइट हमने क्या फाइंड किया, हमने ये फाइंड किया कि आज तक जो भी कस्टमर्स आर लीविंग ऑर्गेनाइजेशन, they are youth people. Point number one. Second, youth people are facing difficulties in fiber opticals. Youth people don't like to do monthly recharge. That is a headache for them. So you try to work in this direction. So we give a direction for a company where to work it. So वही सोचो कहाँ पे काम हुआ आज से 6 साल पहले से. Fiber optical has become better in India. Monthly recharge concept has been finished in India, and youth people are very happy with your services. Solve हो गया ना? And for recharge, you don't have to go to the store for electronic payments. ये सारी चीजें पे काम हो गया. People have not changed the network.